अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इतना छोटा सा मिस्टर हनी, बस Yes. बस। वाह तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हनी तो शहद होता है, बिल्कुल Yes. शहद मीठा होता Oh, है ना yes. आपको मीठा इतना खाया कि आप हनी हो गए। हाँ। ऐसा नहीं सभी पूछें तो कितने मीठे हैं। आप तीखा भी खाते हैं थोड़ा सा। हाँ। चलते हैं। तो ईटिंग डोसा फ्रॉम द फेमस डोसा मैन इन, आगे कहते क्या है, अच्छा मेरे ख्याल में वाशिंगटन शिकागो का कोई शहर है, देखते हैं इस वीडियो में। तो वहाँ का डोसा दुनिया लाइन लगा के खा रही है, वॉशिंगटन। मेरे ख्याल में। आप सुनते हैं यूनिक नेम इंडियन। It is an absolutely beautiful spring day here at Washington Square Park. The trees are green, the sky is blue, and I am hungry for lunch. I'm getting food from one of the most famous New York City street carts called New York Dosas, headed by the legendary Dosa Man. As the name implies, dosas are the main offering. Dosas are basically like crepes, and they've originated from South India. They can be stuffed with a variety of things, but New York Dosas is all vegan. For years, the cart has been a fixture of Washington Square Park, and it is extremely popular, which in turn creates long lines and wait times, so I better get myself over there. Since 2001, Thiru Kumar, better known as the Dosa Man, has been serving dosas from a street cart tucked in a corner of Washington Square Park. Over the years, he has received praise and acclaim for his food the world over, making his all-vegan establishment a destination-worthy restaurant. New York Dosas is open Monday through Saturday, but only 11 a.m. to 3 p.m. before all the food is sold out. However, it's best to check the Dosa Man's Twitter before planning a visit, as occasionally the cart is absent from its typical hours. I did just that before I arrived. So I'm on the Dosa Man's Twitter page, and when I scroll down, I see the latest tweet. It says he's open today. When I scroll down just a little bit more, there's another tweet with about the same amount of time that's passed, and it says he's closed. I'm confused. Thankfully, when I got to the park, New York Dosas was open for business. I just got in line. It's about 11:30. Let's see how long it takes. This is my current book to help pass the time. Thiru Kumar is a one-man show who makes his dosas to order. As a result, wait times can be long, but in a half hour, I reached the front of the line and relayed my order. The menu consists of a few different dosas along with a couple of appetizers. It took maybe 3 to 4 minutes for my order to be prepared. And look at that, my dosa and a samosa. Looks beautiful. I got the establishment's most popular offering, the special Pondicherry dosa filled with fresh vegetables and potatoes. On the side was a cup of sambar, which is a lentil soup containing vegetables. There was also a coconut chutney. In addition, I purchased an appetizer, a samosa filled with peas and veggies. So this is a big plate of food. I'm very happy about that. First bite. That is really nice. I mean, the dosa itself, the sort of like crepe-like portion, really flavorful. Has a nice little crunch to it though, but it's still soft and like a blanket holding all these wonderful vegetables and potatoes in. It's really good. So on the side is a coconut chutney. I'm gonna dip my dosa in there, get a little of that flavor. That's good. Love the coconut flavor that really adds to the dosa. It's very good. While the chutney imparted a pleasant flavor, it's not completely necessary, as the dosa itself, which is made of rice and lentils, pairs beautifully with its fillings. The veggies were fresh, the potatoes provided a good body and an additional textural element, plus the whole thing was just cooked perfectly. Really loving the potatoes in here. There's so much flavor to them. Plus the fluffy texture they provide. Oh, so good.
It should also be noted that when ordering, one can request how spicy their dosa should be. So I got my dosa at the medium spice level. It's not too spicy, there's a bit of spice, it's pleasant, but I think next time I'd go for the full spicy level. So on the side here we have a lentil soup, I believe. Really good flavor. A little spice to it too. That is nice. So on this side, I got one of the appetizers, which is a samosa, only $3. That is really good as well. Wow. That is awesome. It has a super flavorful potato and vegetable filled filling. The texture on the samosa is wonderful. It's wrapped in a beautiful, flaky, wonderful shell. This is so good. A popular off-the-menu item is the samosa dosa, where samosa takes the place of the typical dosa fillings. After having both separately, I would imagine that it would be pretty good considering one gets a crispy textural component from the samosa shell. You know, this is not the most structurally sound dish. I kind of wish I had a fork. I am so glad I came when I did. This line is now 3 times the size of when it was when I came. The time right now is about 10 to 1. The moral of the story, if you want to eat here, get here early. I felt so good sitting in the shade at Washington Square Park on a perfect spring day, eating one of the best dosas in the city while everyone waiting in line looked on in envy. Now, I can't say that I've had a lot of dosas in my life, but hands down, this is the best I've ever had. That lived up to the hype. Oh, that was so good. Plus, I spent only $13 and I've got a full stomach. There are not many places in Manhattan where you can get food of that quality and of that quantity for that kind of price. And it was vegan. I feel like I got some good karma points for that. I also really appreciate the fact that it's the Dosa Man himself that's cooking everything, that's running the whole show. With such a successful establishment, he could have easily passed the reins to somebody else, sat at home and just taken the profits. The fact is, you hardly see star chefs with the names on their restaurants actually cooking in their establishments. You go to Gordon Ramsay's Fish and Chips, Gordon Ramsay is not cooking your fish and chips. So it was not only awesome to have food that good, it was just amazing that the legendary Dosa Man himself cooked it for me. That really just added to the whole experience of it. In summation, the lines are there for a reason. New York Dosas is an incredible, iconic establishment of New York City. It is worth going to, and I'm so glad I finally got to eat there. जी जनाब, वॉशिंगटन में डोसा मैन, वॉशिंगटन वन मैन शो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतनी रश लगे होने के बावजूद भी अकेला बंदा धड़ाधड़ बनाया जा रहा है। यही चीज़ मेरा जो फोकस था ना सारा इनकी उसी चीज़ में था कि यार ये अगर वन मैन शो है तो इनको रेस्ट कब मिलता होगा। और इतनी लंबी लाइन के 11:30 से लेके बोले वो सुबह से लेके 11:30 हो गया और ये लाइन लगी हुई है और ये डोसा देखो आप, ये वन मैन शो चला रहे हैं, तो उसको रेस्ट कब मिलता होगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो बंदा जो काम डेली बेसिस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है ना, उसमें फिर उसको पता ही नहीं चलता, आदी हो जाती है, आजिज़ी आ जाती है उसमें, आदत हो जाती है, हाथ चल पड़ता है। अच्छा, उनको तो क्या नींद में भी इनके हाथ ऐसे ऐसे चल रहे होंगे जिस तरह ये चल रहे किस तरह इसका। अच्छा, मेरा ज़्यादातर मैं हैरान ये रह गई कि इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद कि एक बंदा होता है ना कि यार लाइन वाले कुछ हमारे कस्टमर ख़राब हो जाएंगे, क्या है मैं अपना वर्कर रख लूँ, लेकिन क्या पता रखी हो वो जायका चेंज होता हो, कुछ शिकायत आती हो। ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना इसको प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये जो बंदा साथ रखेगा उसको समझाने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो बिना ये हमारा पाकिस्तानी है कि नहीं, उसको बंदा रखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नो एंड नेवर। बिल्कुल बिल्कुल मेहनती लोग होते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास देखो पैसे दे दिए गए ना तो वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये डोसा है, ये यूनिक चीज़ है, ये हर जगह नहीं मिलती, तो उसने खड़े होना है। और मैं समझ रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे लोग वैसे ही टाइम वेस्ट जो करने आते हैं। अच्छा, बाहर मुल्क में ये चीज़ें इंडियन मिल रही है तो इसका मतलब है कि इंडियन लोग वहाँ हैं, इंडियन लोग। और जैसे कहा था ना कि इंडियन लोग
लेकिन ज्यादातर वो दूसरे लोग फॉरेनर दिख हाँ, रहे थे, हाँ, अंग्रेज foreigner। ज्यादा खा रहे थे। अच्छा, और ये लोगों ने थोड़ा सा इनका नाम भी चेंज कर दिया है, डोसास। बट आप देखो इंडियन थे तो 2 पिक्स उन्होंने उनके हाँ, साथ फिर उसके बाद मेरे ख्याल में लगाई, वायरल हुआ है हाँ, शायद, पता नहीं है ना। ये चीज़ उन्होंने दिखाई फिर क्या हाँ भाई देखो ये इंडियंस भी हमारे यहाँ आपने मैंने पहले भी पूछा था डोसा खाया, आपने कहा था खाया है। डोसा हाँ, है ना? खाया है, मैंने तो बिल्कुल। खाया है। हाँ, खाएंगे हाँ कभी, बिल्कुल, taste लेकिन करेंगे। इनका थोड़ा यूनिक मुझे क्यों लगा कि एक भरा हुआ था, अच्छा। रोल स्टाइल में था, रोटी तो वही है हम्म। लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल, अच्छा कोकोनट की चटनी भी है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम चाय जैसे पी रहे कप में। हाँ। आई थिंक सो वो चटनी थी जिस लेकिन तरह इतनी वो ज्यादा मजे टेस्ट, से। इतनी ज्यादा मिर्च नहीं होगी उसके अंदर। हाँ, नहीं, नहीं। नॉर्मल पी सकता है इंसान। हाँ जैसे हाँ। कि सांभर के साथ भी खाते हैं। सांभर क्या होता है? सांबर आई डोंट नो वैसे कमेंट के जरिए से बताएं। हाँ। हमें भी नॉलेज होनी चाहिए कि सांबर की चटनी है क्या क्या। होता है? मेरे हाँ। को जैसे फील होता है सांबर इमली की चटनी है शायद। आलू बुखारे की मुझे चलो फील देखते होता है। हैं। देखो कि अच्छा। डोसा एक चटपटी डिश है, हाँ। ठीक है, मीठापन भी आता है उसके अंदर ना, एक ऐसी डिश है डोसा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि आलू बुखारे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि पूरी दुनिया इंडियन फूड की फ़ैन है, पूरी दुनिया इंडियन फूड हाँ। की दीवानी है। बिल्कुल। लाइनें लगा के डोसा खाया जा रहा है और हम जो है करीब होते हुए भी डोसा अभी तक नहीं खाया। बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये कि चलो क्या करें, जिनके साथ जाना तो वो खुद ही चले गए डोसा खाने। अच्छा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, लिटरली मैं देख रही थी उसे, पानी आ रहा था। और इंडियन फूड्स की तो मैं दीवानी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, इनका जायका, इनके अच्छा सफाई के भी तरीके होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सारे डिशेस तो बनाए बहुत ही जाते हैं। ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।